discuss something related to employee promotion, demotion, transfer, and separation. Apart from this, it is in your unit 3 performance appraisal also we will discuss, right? So today first we will discuss that there are most 4 important factor related to employees. Ebe porjant ame kon discussion kortile now, whatever may be the we have discussed na related to the new employees of the organization. New employees, how the employee can enter in the organization. For that, what are the procedure we should adapt? जोटा कि आमे कहले recruitment, selection, placement, induction, orientation, onboarding, all those factors we have used for the newcomers. But now we will discuss something related to existing employee, right? Where we will discuss transfer, promotion, demotion, and separation, employee separation. These are the 4 most important factors. First, we will discuss what do you mean by promotion. Student, clear भले से सुनिबे बुझिबे जहा डाउट हैला लास्ट रे मते क्वेश्चन पचारिबे हैला आगे ना भल से ध्यान से सुनंतु. Now what do you mean by promotion? See, promotion means we can call as it is a upward movement of the employee in the organizational hierarchy. Promotion means it is a vertical movement of the employees. We can call the promotion means it is the upward movement, or we can call as a vertical movement of employee in the organization. Means the employee can move lower level job to higher level job in the organizational hierarchy. For example, suppose the employee is working presently in the lower level, then the employee can move, it may be towards middle level. Then after if the employees are working in the middle level, then the employee they can move towards the top level. So basing on this, the employee can move from lower level job to higher level job, right? Where the employee will get higher designation, more salary, higher responsibility, more status, more facility, and more benefit. जो थरा में कौन पाइबा promotion रे ना we can get everything, no? जोटा कि आमे जोठी थिले जो designation रे थिले, suppose presently मु थिली कौन ना as a management trainee, तो मु promotion हेले कौन है भी as a assistant manager, right? So promotion पर मोर कौन बढ़ी गला ना designation बढ़ी गला. So the employee the employee can means what? There on the basis of promotion, the employee will get the higher designation, more salary, more status, more higher facility, and more benefit. That we can call as a promotion. And it is always, it is an upward movement. It is a vertical dimension, right? I mean, lower level ro, dhire top level ko pahunchiba. Entry kole koutu? Entry kole through placement. Now, organization kon kariyo promotion. Kebe karibo? After probation period. ଆମର ଯେତେବେଳେ tenure complete ହେଇଯିବ ନା probation period କି ଆମର ଯାହା ସବୁ ମାନେ organization, then the organization can promote the employee. Right? Now, basically, what purpose of promotion कौन? काहे हम लोगों को promote करूचे? Simple कथा, no? Purpose, objective, importance. जदि हम सब को analysis करिबा ना, so we can promote employee to motivate the employee. Generally हमें कहि परिबा. Why we can promote individuals? See, we can promote individuals to motivate the employee. काहा को motivate करिबा? Individual employee को motivate करिबा. Apart from these, the other employees also they can motivate. Suppose we can promote one individuals, no, based on तार कौन हमें देखि कि promote करिबा सेटा त हमें analysis discuss करिबा basis of promotion. But if we will promote one individual, then the other employees they can also, no, they can ever about the, no, these are the things the person is did for the organization. That's why organization promoted the employee. Not only the individual employee will motivate, the other employee also they can inspire and motivate. And basing on this, they can basically what? We can create a healthy organization and atmosphere, right? And also through promotion, employee motivation will be there so that the employee loyalty, dedication, commitment, no, belongingness, all those things that relate to the organization, it can be possible. And basing on this, the employee can give their 100% effort, no, dedication, 100% effort, where the productivity can be increased. Ultimately, organization goal can be achieved. So this is what promotion. I mean, promotion kahi ki douche?
ना अल्टीमेटली एम्प्लॉय को मोटिवेट करबा पे कोन मन इच्छा हमें प्रमोशन दे देबा ना हमें ना डिस्कशन करबा हाउ वी कैन गिव द प्रमोशन टू द एम्प्लॉय व्हाट आर द बेसिस कोन बेस देखि कि हमें लोगों को प्रमोट करबा दैट वी विल डिस्कस बट स्टिल the organization promoting employee to motivate their need basically not only the individual but also all the people basing on this the employee can be more loyal dedicated committed no the employee can be the belongingness towards the organization all those things it can be happen because the employee is a motivated employee and basing on this what will happen now organization the employee can give their 100% towards the organization ये सब हेले employee ता dedication रहिबो ही रहिबो राइट सेटु ऑर्गेनाइजेशन मते किछि दउछि तो मो ऑर्गेनाइजेशन पई किछि तो करिबि ना सेटा हमर जो सेही चिंताधारा हमर डेवलप हो राइट तो सेटु हमें कोन करबा नाउ द बेसिकली व्हाट ना ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इट कैन बी इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ development sustainability everything can be possible so ultimately organization can achieve the goal and objectives so this is the purpose objective importance of promotion right what are the types of promotion and what are the basis of promotion कितने प्रकार of promotion see the types of promotion we can call there are two types of promotion one is the dry promotion second one is the promotion with upgradation now what do you mean by this see dry promotion means what dry promotion मान तो हमें ना जानिले कि promotion means that it is an upward movement promotion means it will change the designation of the employee it will no it will the employee will get every facility and benefit no it must be higher jaha pautli taru to definitely adhika but in the dry promotion organization can promote the employee sukhila promotion jota ame kahuche no organization will promote the employee promotion means that upward movement is there where the employee will get in the dry promotion the designation will change आपण हमर designation टा change हे जिवो upward movement को भी हमें जिबा designation change हे जिवो but the other facility benefit for the period of time the employee may not be received ए जो हमें कहिले promotion means the other facility benefit status responsibility no salary सब जो हमें अधिक पाइबा सेठी से सब for the timing for the period of timing हां सेही से सब facility से न पाई पारे right designation may change but facility benefit may not be received by the employees this is called dry promotion right and promotion with upgradation mane kon the promotion with upgradation means that is the vertical dimension or upward movement where the designation will change ta sahita the employee will get every facility and benefit jota ki ame koche real promotion right so this is what the two types of promotion doing by the organization now basis of promotion kon see there are three best promotion को best हमें लोगों को promote करिबा कोन देखि कि best माने कोन कहि कि लोगों को promotion दबा कोन देखि कि समान कर हमें promote करिबा so basis of promotion based on the three factor it relate to merit based promotion seniority based promotion and merit cum seniority based promotion what do you mean by this see the merit based promotion we can call how we can promote the employee in the organizational hierarchy. The merit-based promotion, it implies the organization can judge the employee's knowledge, skill, qualification, no, experience, ability to do the work. And basing on this, overally, we can analyze and we can judge his or her performance. Based on this factor, the organization can promote the employee. हमें कौन देखिए ताको promote कले merit देखिए. Merit means what? What I told you. These are the talent quality. The person can do. No, the person can handle. The person is highly effective and efficient. No, basing on this, the person, the performance of the individual, the performance of the person, it is highly satisfactory and excellent. No. And basing on this, the organization need this category of employees. The organization don't want to lose this category of employees. That's why to motivate basically what? More motivation of the employees towards the organization and the employee can give more effort. No, that's why
the organization can promote the employee on the basis of this factor. That we can call as a merit-based promotion. Now, seniority-based promotion means what? Seniority-based promotion means the continuity of the employee, the tenure of the employee. How much time the employee spent towards the organization, right? Suppose the employee spent towards the organization, how much? Now it is more than 5 years, or it may be since 10 years, the employee serving towards the organization. Now, based on this factor, based on the tenure, based on the seniority of the employee, we can promote the employee in the organizational hierarchy. एते वर्ष हला काम कलानी हम गोटे टेन्यूर सिस्टम रखिचे सो सेतिकी हेला माने गोटे एम्प्लॉय प्रमोशन ऑटोमेटिकली हबो केते वर्ष इट मे बी 3 इयर इट मे बी 5 इयर इट मे बी 7 इयर इट मे बी 10 इयर सेतिकी भितरे सेही लोक सेही पोजीशन को जिवो तो कंपलसरी जोटा कि हमें करबा ही करबा से टाइप हमें कोन करले ना गोटे हमें प्रमोशन करले राइट जदि हमें गोटे एग्जांपल बनाइठी सो सी मेरिट बेस्ड प्रमोशन इट इज हाईली अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय नो प्राइवेट सेक्टर कहा को देखे मेरिट को देखे बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर दे प्रमोट द एम्प्लॉय एज पर द सीनियरिटी बट आज का डेट रे जदि हमें देखिबा इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट सी द कंफ्यूजन रिलेटेड टू मेरिट बेस्ड एंड सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन कन बहुत ऑर्गेनाइजेशन रे कोन हैला ना कंफ्यूजन हैला क्या व्हाई द मेरिट बेस्ड व्हाई द सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन डिफरेंट काइंड ऑफ मींस व्हाट द अमर तापे बोली बहुत सारा लोकंकर व्यू रहिला ना व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रमोशन इज देयर काहे कि गोटे लोक मेरिट बेस्ड प्रमोशन जते हैला हां जो माने अछंती एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय धर गोटे लोक आसिला ऑर्गेनाइजेशन रे बेस्ट काम कला हम सेठी कोन कले आफ्टर 2 इयर ताको प्रमोशन कर देले हैला गोटे भलो पोजीशन को सेठु जो माने 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष ऑर्गेनाइजेशन रे अछंती से माने कोन कहिले अरे कि आश्चर्य कथा हमें माने किछि करनु ऑर्गेनाइजेशन रा मिति दिन होला रहिलो हम पई किछि नै से आसले 2 वर्ष होला ताको प्रमोशन हे गेला हां इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट राइट जतले गोटे सीनियरिटी लोकन को प्रमोट करा गला न ऑन द बेसिस ऑफ द टेन्योर जो माने एक्चुअली भलो काम करछथि से माने कहले की कथा कोन हम इते बेस्ट काम करछ हमर किछि नै से गोटे सीनियर अछि कहि तार प्रमोशन हे गेला कोनडा से काम करछथि कि हमें कोन करूनु सो दिस इज द बेसिकली व्हाट confusion. This is the basically what different kind of situation it happened in the organization. That's why organization adopt kala kona na chalo duita ko hame merge karta kaha ko merge kariba na merit cum scenario we can analysis at the time of promotion also we can analysis the factor we can analysis the merit as well as the seniority basing on this also we can promote the employee if it is required right so तामाने कोन एना मेरिट रो प्रमोशन होने सीनियरिटी रो प्रमोशन होने दुटा को अछि थर्ड ऑप्शन अडॉप्ट करा गला इफ वेयर इट इज नेसेसरी वी कैन एनालिसिस बोथ द फैक्टर एंड वी कैन प्रमोट द एम्प्लॉय तामाने नु आपण ऑर्गेनाइजेशन रे 5 वर्ष ला अछंती हां आपनकर परफॉर्मेंस बिल्कुल नील हम आपन को प्रमोट करिवु नो सेटा हेत हैला सो हमें परफॉर्मेंस सहित सीनियरिटी सहित हमें परफॉर्मेंस भी देखिबा so variety kind of things adopted by the organization in the present day environment. So this is what the promotion. So promotion, what is promotion? What are the objectives of promotion? Types and basis of promotion. Mane rakhibe. Promotion just opposite asila kona demotion. It is a vertical dimension. Promotion vertical dimension. Demotion is also vertical dimension. Promotion opposite kya asila? Demotion. Why it is opposite direction? Demotion kahin ka opposite hela. See, both are vertical dimension. But promotion is a upward movement, demotion is a downward movement. Promotion रे ऊपर को गले, demotion रे कौन कले तळु को आसी गले. Right? It is a downward movement in the organizational hierarchy. Assistant professor थिली कोठु आसी गले ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग को आसी गले. Assistant manager थिला कोठी के आसी गलो again management जोठु जाइथिलो सेठी के आसी के पहुंच गलो. Right? So where the employee in the organizational hierarchy while the employee will come to downturn the downward movement of the employee where the salary also it can be decreased designation also can be decreased salary designation facility benefits everything it can be
the organization can remove. Means not remove, it can be minimized. It can be decreased, no? Seti amar enhance hotula, increase hotula, it decrease hejibo sab. That is what the demotion. Why demotion jodi ame demote kara jauchi ame kon kahile the basically promotion, employee motivation can be possible, right? Employee performance, employee motivation, employee loyalty, employee commitment, dedication, belongingness, everything it can be happen towards the organization. The demotion re sabu kon asibo downturn ko asibo. Acha demotion ame kahinki koche, why the demotion is there? Jodi employee demotivate habo demotion re, definitely it is a kind of insulting to the employee, right? जितने आमे सब कम पाइले आमे तल लेवल को आसिले, so it is insulting, so it is a one kind of frustration moment. So एटी तो employee demotivate habo, dissatisfied habo. So आमे why the organization taking such kind of steps? See, the most important reason तो 1000 अच्छी हैला, but the most important factor is, right, the organization taking some kind of disciplinary action. किसी कोटे the employee may did some kind of what misconduct kind of things, or some kind of things related to the organization, where for the punishment manner the organization want to take some disciplinary action. So basing on this, the demotion can be possible, right? Apart from this, ame kahi pariba the employee will not obey the rules and responsibility, not doing properly in the organization. Rules regulation manilani, responsibility proper nellani, no? Se kshetra re madhya ame demote kari pariba. Apart from this, the employee is there in a such position, but the employee is not worth for this position. जो position रे employee अच्छी, से employee से position पाए बोले worth नुहा. काहे कि the employee is not handle in that position, the employee cannot handle that kind of task, no? The employee may not handle that kind of responsibility. So kori parani properly, unable to do the work. The administrative skill is not there, the organization skill is not there, no? Now what we can do ultimately, jodi se kamota kori parni taku ame setu hateiba na hateibani na, se kamo nakale be ame setu rakhiba to possible to no. तो हम इसे कौन करीबा ना, we can basically demote the employee, ताको से तो बाहर कर देबा, and the employee के हमें आउ गुटे जगह पठेबा, आउ लोगों को जे actually eligible हम से लोगों को पठेबा. से क्षेत्र रे हमें demotion कर. Demotion जदि हमें कहबा variety kind of factors organization demoting to the employee. ना आउ गुटे जदि factor ना बासी organization having what the economic slowdown is there in our organization, no? And organization unable to pay, जदि लोगों को इना पेमेंट करी पानी, तो से कौन करिवो ना, सेठी किछि लोगों को से टर्मिनेट कर देला, हम तो जिपा टर्मिनेशन को टर्मिनेट कर देला. आउ किछि लोगों को कहला कि देखो भाई मु एते ये देई परिबिनी सेही पोजीशन रे, तुमे जदि चाहुचो इना काम करिवा पई, देन तुमे माने सेही जो तल पोजीशन सब अछि सेठी आसी कि जदि हैंडल करिवो, मु एई टाइप रो सैलरी देई परिबे, एई टाइप रो देई परिबे फैसिलिटी, आ एई टाइप रो इना मु डेजिग्नेशन, मु सेही डेजिग्नेशन रे तुम मानु को इना देई परिबे. Getting mu tumko afford kari paribani because I am unable to provide this much of things, no? If you are wanted to work in my organization, then you have to manage it. Se kshetra re madhya employee mananku se kon karibo na, due to the circumstances, certain circumstances of the organization also can demote the employee, right? So variety kind of demotion factor it can be there. So bahut sara reason achi organization ra, से अनुसार आमे किछटा punishment factor रे देई परिबा, किछटा the person is not worth for the job देई परिबा, the person is not means what, the say amar से जो area is organization रो economic slowdown पे आमे करि परिबा कि organization रो किछ fault पाए. So variety kind of things the employee can demote towards the organization, right? Then चलो तो आमे जिबा कोडी transfer. What is transfer? See, if promotion is a vertical dimension, then promotion and demotion is both the factor is a vertical dimension. Promotion can upward movement, demotion can the downward movement. It is a vertical dimension, where transfer is the horizontal movement.
It is a horizontal dimension or horizontal movement of the employee. ता माने नुह कि ट्रांसफर रे वर्टिकल डायमेंशन नहीं, वर्टिकल डायमेंशन भी अच्छी, but most of the time organization adopted the horizontal dimension. ता माने मैम कंफ्यूज करले बुझी पालोन आस्तुबो माइंड को नो सी ट्रांसफर कहूची transfer it related to it is purely horizontal dimension, but sometimes it is also vertical dimension. How? See, transfer it means what? The movement of employees. Transfer first kon janiba, then vertical horizontal how it related we can notice. No, transfer means it is the movement of employee koti now one department to other department, one area to other area, one work to other work, other work. No, basing on this, the employee movement can be there, right? Where the employee will get in the horizontal dimension. I'm not talking about vertical dimension. In the horizontal movement, we can call as a lateral movement of the employee, right? Where the employee will get, no, the movement will be there. The transfer, the movement, it may be one department to other department, one area to other area, one city to other city. But where the employee will get there is no change in designation, salary, status, facility and benefit. सेठी कोनोसी चेंज हमर हबो नाही. Suppose मु काम करतली कोन as a assistant manager, presently I'm working as a assistant manager, I'm getting 30,000 salary ki 40,000 salary, right? And I'm basically what? My status, facility, benefit, what I'm getting after transfer. मुझे तेरे transfer है भी ना. कोडी मु काम करतली ना. Suppose I'm working in the Bhubaneswar कोडी ना मु काम करतली नयापल्ली जे. मते कोडी के ट्रांसफर करा गला, कटक को मते ट्रांसफर कर देला, राइट? मोर एत तो एरिया चेंज हे गला. हां, सो सेठी कोन हबो मु सेही सैलरी, सेही स्टेटस, सेही फैसिलिटी, सेही बेनिफिट रे मु ट्रांसफर हेबे. There is no change in status, responsibility, everything, right? But it is a horizontal transfer. Sometimes it is implemented in the vertical also. केमती ना promotion come transfer जेतला हबो ना promotion come transfer सेटा हला vertical dimension, right? जेतला हबो हमर कोन ना demotion come transfer, that is also vertical dimension of the transfer. तुमको the person is working presently working in भुवनेश्वर रे काम करछि, देखो प्रमोशन दिया गला. नो कोन थिला ना हमर पर्सन थिला असिस्टेंट मैनेजर, ताको एसोसिएट मैनेजर करा गला, राइट? करी कि ताको से कोडी काम करथिला भुवनेश्वर, ताको कोडी के पठाई गला बेंगलोर पठाई गला, राइट? सो सेठी कोन हैला प्रमोशन कम ट्रांसफर दुईटा कामरा आसला जेटा कि वर्टिकल डायमेंशन को मैच कला. नो सेमती हमें कोन करिबा ना लोक काम करथिला कोडी भुवनेश्वर रे आज असिस्टेंट मैनेजर, ताको हमें कोन कर देले ना हमें प्रमोशन डिमोशन करी के ट्रांसफर कर देले. डिमोशन करी ट्रांसफर कोन कर देले ना असिस्टेंट मैनेजर से कोडी के पळे आसला ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग को अगेन आसी गला, वो डिमोशन हे गला, राइट? सेही वर्टिकल डायमेंशन रे हमें गले ट्रांसफर कोडी कर देला, मालकानगिरी को ट्रांसफर कर देला. कारण डिमोशन आसी गला माने तो हमर फैक्टर सब हमर सब चेंज हे जिवो. So vertical and horizontal dimension is there, but most of the time the organization adopted the horizontal dimension of the movement of the employees in the organization. काहे की why कोन पे ट्रांसफर हमें कोचे जेमति कि हमें कहिले काहे कि हमें प्रमोशन कोचे सेमति ट्रांसफर भी हमें काहे करूचे किछि तो रीजन थिबो ना. ना सी the purpose, objectives, importance, benefit of the transfer जहां भी क्वेश्चन आसीबो जेमति कि मो कहिली कोन पर्पस, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, इंपोर्टेंस all are same in terms of the promotion. Purpose, objective, importance जहां क्वेश्चन आसला all are same related to transfer जेटा कि मोना डिस्कशन करूची, राइट? कोन ना बेसिकली हमें कहिबा इति the transfer, the purpose of transfer, the objective of transfer. Sometimes the organization try to meet the organizational requirements. How? See, organizational requirement, ask for the organizational requirement. Suppose the organizational requirement, I'll give you the example. Suppose the branch is there, the organization having a branch in Bhubaneswar, right? Now what will happen, the organization wanted to close the Bhubaneswar branch. काहे कि तार बहुत रीजन अछि, तार कोन प्रॉब्लम होला से तार क्लोज कर दो, सेतिर हमें कोन करि पारि. Now the organization wanted to close down the Bhubaneswar branch. Now what will happen?
the organization can transfer the employee to the Cuttack branch as per the requirement of the organization. Organization requirement kala se अनुसार organization utilize kala लोगों transfer kala koti na Bhubaneswar Cuttack को as per the requirement of the organization can transfer the employee, right? So sometimes the organization also transfer the employee to meet the employee need. Employee need केमते meet करिवो? See, जेमती हमें कहले organization need fulfill हैला, सेमती employee need मध्य fulfill हे परिबो. How? See, the employee is presently working where? Now working at Bangalore, right? But the employee's hometown is Bhubaneswar, where the parents' families are staying in Bhubaneswar. Now, what will happen? The employee can, based on the request of the employee, right? So the organization can transfer the employee Bangalore to Bhubaneswar because the employee having the request, the employee basically requested to the organization. That's why to satisfy the employee need, to help the employee, to motivate the employee, the organization can transfer the employee this area to this area, right? So this is to satisfy the employee need also. नहले आमे कहबा कि ना मो घर होची सहीदनगर रे मो काम करची कोठी पूरा एयरपोर्ट एरिया रे मो डिस्टेंस बहुत हे जाउची तो ब्रांच हमर एठी भी कोटे अछि सो मते टिके ट्रांसफर कर दियंतु सेठी कि जोटा कि मो घर पाखरे काम कर परिबे also possible. So ultimately कोन आमे कहबा ना जहा भी होची एम्प्लॉय रिक्वेस्ट आमे एटा to satisfy the employee need, to ensure better utilization of the employees. Employee को हमें better utilize करि परबा ट्रांसफर कोन लोकन को केमती better utilize करबा कोन तार better utilize करबा सी हमें ऑलरेडी जानि जे मो स्टार्ट फर्स्ट क्लास रे कहितले human resource organization treated human being as a resource. Why? Because human resource is the only active factor of production. सी हला गोटे active आ सब हले inactive के जेमति कि आ कहार लाइफ होची जेमति कि हमें कहबे मनी मशीनरी मटेरियल हां plant building all the movable immovable property कहार लाइफ में only किए होची ना मनुष्यर having a limitless energy भर्ती करी कि भगवान एनर्जी हमको देइछन no the basically and it is also created by the nature आ सब थेला man made but created by nature created by God हेले कि only the human being जहार कोन अछि ना full of knowledge skill ability talent no भर्ती करी कि भगवान देइछन so ए सब को हमें बेटर यूटिलाइज करि right so it kon कहला to ensure better utilization of the employee better utilization of the human resource what we will utilize the knowledge skill ability talent in a proper manner where it is required जोठी required अछि हम से को ट्रांसफर कर परिबा right make the employee more versatile काहे कि हम ट्रांसफर करछे ना लोकन को और अधिक में versatile करबा माने कोन ना versatile make the employee more versatile it implies see where हमें कोन करिबा ना if we will transfer the employee ना केमिति ट्रांसफर करबा मने कहबी दुटा प्रकार ट्रांसफर अछि इंट्रा डिपार्टमेंटल टाइप रे राइट सो जेतला हमें ट्रांसफर करबा ना एम्प्लॉय को so at that particular moment the employee can move one department to other department where the employee can learn everything no suppose it may be the interdepartmental transfer is there where the employee will move one department to other department so employee can learn variety kind of things no variety kind of knowledge it can be gained by the employees so what will happen ultimately in terms of the while the organization will transfer the employee whatever may be the department whatever may be the area it may be the intra and it may be the inter so what will happen the employee can adjust employee can handle every kind of task duties and responsibility धर आमे कहिले हठात रूप रे अकाउंट डिपार्टमेंट रे दिलो को काम करथिले छाड़ देई पळेले रेजिग्नेशन त माने कोन ऑर्गेनाइजेशन से लोक को छाड़ देला कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लोज कर देबो तो पॉसिबल न हो सेटा तो केबे भी न ऑर्गेनाइजेशन तो रन करिवो लोक थाउ कि न थाउ हैला तो एठी हमें सेही जो अकाउंट डिपार्टमेंट ता सवालिबो कि आमे कोन गुटे लोकन को बाहर आनी के संगे संगे रिक्रूटमेंट करी सिलेक्शन करी प्लेसमेंट करी इज इट पॉसिबल नो नॉट पॉसिबल तमे काकी करिवो से काम सेमती लोक कॉम्पिटेंट लोक थिले तो से काम करिवे ना सो सेही पाई आमे लोकन को कोन करिवा एमिति भाबरे समस्त को मूवमेंट करैतिबा ट्रेनिंग देतिबा जे जो प्रकार काम भी करि पारे समस्त सब प्रकार काम हैंडल करि पारे एटा सेही पाई आज का डेट आमे कोन कहूचे ना एम्प्लॉय मानन को आमे जितरे तुमको स्पेशलाइजेशन दिया जाउची ना आपण मानन को वैरायटी टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया जाउची डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर रखा जायछि
कहीं ना सब काम को आपण माने हैंडल कर परिबो ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड आल्सो द एम्प्लॉय आ कोन करि परिबा ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफर? वी कैन एडजस्ट द वर्कफोर्स. Adjust, how we can adjust the workforce? As per the requirement, we can transfer the employee. As per the demand, we can supply the manpower, right? Suppose in one area, suppose we can say in one area, plenty of people are working, huge number of employees are there, but that much of activity, it is not there in that area. Menche loko achanti, but kamo semti kichi nai. One area. Other area, few employees are working, but the workload is very heavy. Workload is there. Loko mane seti bahut heavy workload re kamo kochun and unable to handle this kind of work. No, they are very basically what employee, it is unable to handle this much of pressure. So kon kara jibo, am adjust kariba workforce को जोठी अच्छंती मेंचे लोको where the activity is not that much, so सेही लोकों को सेही जगह को जदि हमें ट्रांसफर कर देबा, जोठी लोक माने ऑलरेडी ओवरबर्डन के अछंती नो, आमे से अनुसार लोकों को एडजस्ट करके काम करिबे. सो इटु कोन हबो ना, those are the overburden worker, they can get some kind of relief. Samane definitely relief पाइबे, right? सेमान जो वर्क प्रेशर थिले somehow सेमाने जो दिन राति सेमान को काम करियो पतिला, now they can get some kind of relief, right? And also transfer, it is related to minimize the conflict. Conflict को हमें मध्य minimize करिया पय हमें लोगों को transfer करूचे. Conflict कहार ना, conflict between two individuals. गोटे डिपार्टमेंट रे दुई जन को भितरे conflict चलथिला, हमें कोन करिबा, सेडु जे conflict करथुले दुई जन, हमें एचआर रे कोन करिबो, चलो दुई जन को दिटा अलग अलग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते, सो दैट अदर ना दुई जन गोटे पाखे रहिबे ना डेली झगड़ा. सो चलो दुई जन को दुईटा एरिया को ट्रांसफर कर दे. So this is what basing on the we can manage the workforce and minimize the conflict also. Also penalize the employee. लोगों को penalize करिया पई मध्य हमें ट्रांसफर करूचे. Penalize माने कोन? मु कहितले ऑलरेडी, कोठी को पठाई देबा, मालकानगिरी को पठाई देबा, विचिन्न अंचल को पठाई देबा, राइट? से टाइप रे हमें कोन करिया, ताको पनिश भी देई परिबा, राइट? एंड आल्सो बेसिकली employee will get, employee को punish दबा और ताको penalize भी करिबा. So basing on this we can transfer the employee. Mentor tenure system. Tenure system कोन ना, हमें मु कहिली ऑलरेडी, that is a seniority based promotion, जोथरे कि हमें कोन करचे ना, promotion जदि tenure system रही परिबो, why not transferring the tenure system? Every banking sector, no, जत्ते सब banking sector अछि, जत्ते सब organization अछंती माने, no, so every 1 year or 2 year or 3 year, the employee have to transfer private रे government रे दुईटा करे. तुम जदि जॉब करिवो HDFC बैंक, नो, से सब बैंक मान करे, or it may be you will the employee will work in the any public sector bank जो थरे भी काम करिवो. So tenure system after 2 year की 3 year ताकर गोटे compulsory transfer अछि, have to transfer. There is no choice and alternative. जेमति कि हमर मेडिकल लाइन रे अछि, बैंकिंग सेक्टर रे अछि, most of the sector, no, सब अडॉप्ट करचंदी कोन ना, हमर ट्रांसफर सिस्टम बेस्ड ऑन द टेन्योर. And also we can give some kind of basically what family related issue also it can be solved. But see students, transfer again two type, दुई प्रकार transfer अछि. कोन गोटे असला इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, another is the interdepartmental transfer. मने रखिबो, intra-departmental transfer, interdepartmental transfer. What do you mean by this? See, organization, every organization having different departments. So department कोन ना, departmental HR, marketing, finance, production, IT, no, these are the variety kind of departments are there. While the organization will transfer the employee within the department, we can call as a intra-departmental transfer. While the employee will move one department to other department, that we can call as a interdepartmental transfer. Now how? For example, suppose me is an employee, I'm working in the HR department, right? HR department is a royal major department having many sub-departments. Likewise, marketing department is a department having many sub-departments. Every major department having variety sub-departments. Already I have discussed in your first unit, no? HR department having variety sub-departments like recruitment, selection, training, performance appraisal, ना गोटे 50टा खंडे सब डिपार्टमेंट अछि, जोटा कि हमें फंक्शनल एरिया रे डिस्कशन ऑलरेडी करिचे, राइट? Where
Suppose me as an employee, presently I'm working in the recruitment and selection department. Now after transfer, I'll move towards the training department. So kaha under asla? HR department under asla. Mu koti kamo kortili recruitment selection re kamo kortili. Mu kuade move kale training department ko move kale. Right? Ta mane eta code transfer hela intra departmental transfer. Interdepartmental transfer मु काम करथिले कोडी एचआर डिपार्टमेंट कोडी थिले ट्रेनिंग रे मते कोडी के पटा गला ना मते पोस्टा गला फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव जेटा कि मु काम करिब कोडी पूरा प्योरली मार्केटिंग कस्टमर रिलेशन हैंडलिंग ऑफिसर रे मु सेठी ये करिब त माने मते कोडी मूव कला मार्केट एचआर टू मार्केटिंग दैट इज इंटरडिपार्टमेंटल ट्रांसफर राइट ट्रांसफर आल्सो द वन काइंड ऑफ ट्रांसफर हमें कहबा कोन ना शिफ्ट ट्रांसफर आल्सो इज देयर शिफ्ट ट्रांसफर कौन ना मूवमेंट करिवे दोस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग दिस बिजनेस 24 आवर्स जेमति कि हमें कहबा होटल इंडस्ट्री जेमति कि हमें कहबा मेडिकल सेक्टर हां जेमति कि माने 24 आवर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेट करचंती सो सेडी कोन गोटे लोक 24 आवर्स काम कर परिबो ना सेटा को हमें कोन करबा ना शिफ्ट वाइज ट्रांसफर कर देबा मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट हैला सो मु जदी ए वीक रे मॉर्निंग शिफ्ट रे काम करली कमिंग वीक आई विल वर्क इन द इवनिंग शिफ्ट देन कमिंग वीक आई विल वर्क इन द नाइट शिफ्ट. So basing on this, the transfer also can be possible. Production wise transfer kari pariba, shift wise transfer kari pariba, intra-departmental transfer, inter-departmental transfer. No, ये सब हमें करी परिबा. Right? So this is all about your transfer, promotion, demotion. Now we will go to the employee separation. Separation को हमें ना जीवा. I hope student समझते भल्लो से बुझुतुबो. है ना? Separation. देखो एटा केमती सेपरेट हे जाय तमे पिक्चर एनालिसिस करि परबो सेपरेशन को राइट सेपरेशन माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय सेपरेशन मींस इट इज अ डिटैचमेंट राइट मु कहिथिन ना रिक्रूटमेंट ऑनबोर्डिंग कहिथिली ऑनबोर्डिंग कोडी कहिथिली जते ऑनबोर्डिंग मु कहिथिली मु सेति कहिथिली मु गोटे टर्म कहिबी दैट रिलेटेड टू द ऑफबोर्डिंग सो ऑनबोर्डिंग अछि माने ऑफबोर्डिंग अछि onboarding related to recruitment selection related to ame kon kahile induction orientation all the factor combination of onboarding process the offboarding mane kon offboarding the employee separation we can call as a offboarding process employee separation means it is the offboarding process now separation means what separation means it is a kind of detachment of the employee dekho eta atu kemte detach he jaichi. So it is a detachment of employee towards the organization. Employee separation is a situation when the agreement of service of employees it can come and it will come and jota ki amara jo agreement thila organization seta pura end ko asigala an employee can leave the organization employee sedu kon karibo organization ro chhadi kire palaibo jota ki ame kahile offboarding process employee separation is a offboarding process. It is the detachment of the employee towards the organization. Employee will leave towards the organization, right? And it is a basically what? It is a formal separation of the employees, formal separation between employees and the organization. Through kemiti ame formal separation haba na through different means. We can add up different factor here again. Kaun ase factor? Na through resignation, through termination, through retirement, suspension, no, through layoff जोटा कि हमर गुटे बडा जिंस आज का डेट रे कोरोना रे चलची हम तो layoff जानि थिले बट कोरोना पई बोले layoff ता आउरी अधिक हाईलाइट हे गला राइट layoff so variety dismiss discharge right so basing on this factor the employee can leave the organization and final separation can be possible that also we can call as a offboarding process right now chalo we will discuss one by one factor also dhyan se mane rakh kon resignation first we will go to the resignation now what do you mean by resignation so resignation means what resignation means the employee will serve the notice to the organization that is purely voluntary nobody will force you no you have to jodi ki ame voluntary re maina discussion korchi eti kei tom apan ko force karibeni voluntary resignation mo कहू I'm talking about voluntary compulsory resignation bhi achi right voluntary resignation compulsory resignation I'm talking about the voluntary resignation means where the employee will serve the notice to the organization and voluntary
employee will decide it's himself and herself, right, to resign the job. In the ground of what? Kahin ki mu resign job karibi? Mu to kama kortili, why I'll resign the job? In the ground of many factors, it can be possible. In the ground of, it may be the continuous ill health of the employee, unable to do work, no? It may employee get better opportunity, auri bhalo opportunity paigala. It may employee having some family related issues, tar family problem achi kichi gote, right? So these are the different factors. Basing on these, the employee can give resignation, right, in the present current organization. But sometimes the compulsory resignation is also there. Ita to ma'am ami to ita suninu compulsory resignation puni compulsory achi. Yes, that is we can call as involuntary. Ami jodi resignation desera ame kon kahile na voluntary kahile, compulsory hela involuntary. Jotire ki kon kahibo, the employer will force to the employee, and employer will means what, basically what, impose to the employee to give resignation. Kahinki na jodi tu resignation non dabu, then we can take the disciplinary action to you. Employee emti gote kichi kamo kortibo jota ki ame kon kariba na ame to upare disciplinary action nabu jodi tu resign no de kichi, right? So employer will create such kind of situation because the employer don't want to manage the employee, don't want to accept the employee in the organization. That's why employer will create such kind of situation, and the employer will impose to the employee, and the employer have to give the resignation. Sei kshetra re jodi se type ro situation asila, am to gote employee ko to compulsory kari paribani, to you have to give the resignation, am to koi paribani. Jodi se kshetra re kon habo, see dear students, seiti the employee, before employer imposed to the employee, you have to compulsory resignation. At that particular moment, the employer should go for the domestic inquiry. Jota ki ame gote domestic inquiry ame gote conduct kariba before impose the employee to give resignation. Je ame domestic inquiry kona na ame je ame kahile ki no, if you will not give resignation, we will take disciplinary action against you. So seiti gote small ame kahika domestic inquiry jota ki ame organization re gote je committee thibe, now they will inquiry about the employee, the exactly what is the reason. So the employee have to give the resignation. Kon emti reason achi jota ki, and it is that the reason is the valid reason or not. Kahinki na jodi tume semti employee ku force kala, employee will go to the court of law. Se employee sidu kon karibo, court of law ko jai paribo. And also the employee can go for the trade union, right? Due to tame kon kala na indisciplinary action ta upare nela, that's why the employee can go for the trade union, the employee can go for the court of law. So in that case, the employee basically what, you have to take this step, the organization have to take this step very cautiously, no? Very carefully, very cautiously, we have to take this step. So this is what the resignation, voluntary and involuntary. Got it? Then I'm a death remo kichi kahiba nai, it is the final separation. Data kon khali organization ro final separation ki dunia ro final separation. Hela taku chhad dio. Then asla kon seta gote separation of employee, right? Then asla amar kon na ame discussion kariba na mu jauchi suspension ko, suspend ame employee ko employee suspension. Na employee suspension kon na employee suspension jota ki ame kahiba, suspension is a kind of things. Employee को हमें suspend कर देले organization, काहे की suspend करिबा ना, employee may did some kind of misconduct in the organization, that's why we can suspend the employee. हमें employee को सिर्फ suspend करि दबा, काहे की ना, maybe हमें employee हला dishonesty related to the organization, misconduct माने बहुत जिंस एडी आसी गला. So कौन आसी गला ना, हमें कहबा कि the employee is not honest towards the organization due to the dishonesty related to work. Honesty बिल्कुल वर्क ने हमें कहबानी कि आसीथिले गवर्नमेंट विजिट करिया को आसीले, हां तो समस्तनकर टाइमिंग अछि कोन 10 o'clock आसीला गवर्नमेंट विजिट करिया को 11:30 रे, ही भी ऑर्गेनाइजेशन को आसनाते समस्त को सस्पेंड कर दै पले हे परिबो, because the employee is not honest towards the organization, right? So this is due to the dishonesty, misconduct रे सब कामर जाउची factor. Apart from this हमें कहि परिबा the employee kind of fraud ना, fraud कला कि violence कला, misconduct को मने रखिबे जोटा कि सब आग फैक्टर आ भितरे आसीबो. Misconduct माने fraud, theft, violence, dishonesty, no, and you can damage or lose the property of the employee, employer ना,
जोटा कि आपनकर किछि गोटे भलो गुड्स को प्रॉपर्टी को एट द टाइम ऑफ व्हाट स्ट्राइक यू डैमेज द वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ ब्राइब्स, लांच नौचंती, ए सब कोन करचंती अपन ऑर्गेनाइजेशन रे, यू आर काइंड ऑफ डूइंग काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी ना मिसकंडक्ट. So these are the factor the organization can take this step, and at that moment joti misconduct asla sabu aga factor ame ta bhitere join kar daba, right. So due to some misconduct of the employee, the organization can take this step and suspend the employee. jetile suspend kara jibo employee ko, एमती तो नहीं कि तू एमती कलु मु तो आज सस्पेंड कर देली, मु पार्टी रे कहि देली आ सेटा बेदरे गारो होई गला, सेटा तई परिबोनी, तई परिबो कि नो. सो यू हैव टू गिव द प्रूफ, एविडेंस मस्ट बी देयर कि मु कोनडा तमरो मिसकंडक्ट कली, मो एविडेंस दिखाओ. सो एठी कोन हबो ना, द अगेन द इट मे बी द डोमेस्टिक इंक्वायरी or investigation, the by the basically what the organization will do some kind of investigation. Eta ki karibo, employer karibo, to identify the exact fact, no, where basically age suspension time re na, if the organization will suspend the employee due to the misconduct, so seiti jetele organization misconduct suspend kala, so sei je taku inquiry chalila employee upare, at that particular moment whether the employee will get the salary or not. Question eti asla, seto mu to misconduct kali, mote to suspend kala chhado hela, to ei je mote suspend kala seta to prove hoichi heini, so eta chalchi inquiry, chalchi investigation chalchi, at that particular period of time whether the employee will get salary or not, wages and salary or not. Yes, एठी हमर आसिला the Industrial Employment Standing Order Act 1946 कहूची कहला कि at the time of suspension the employee will get the salary and wages. कौन salary wages पाइबो ना, सीए कहला कि Industrial Employment Standing Order Act 1946, at the time of suspension the organization have to pay the subsistence allowances, जोटा कि हमें कहूचे subsistence allowance, जोटा कि pension suspend time रे जो हमें benefit ता पाइबा, we can call as a subsistence allowance. केते पाइबो ना 50% of the wage रो 50% पाइबो केबे ना first 90 days रे, प्रथम 90 days रे inquiry is going on, the investigation is going on. Now the employee will get at the time of suspension due to the misconduct, now the employee will get 50% of wages of the kaharo first 90 days ro. If the investigation inquiry will basically what, it will go in a longer duration of time, no, सेठी जेतले जदि 90 days रो भी अधिक exceed कला, it will exceed more than 90 days, then what will happen, the remaining period the employee will get 75% of wages, तार wages रो 75% पाइबो remaining period, जो पर्यंत investigation inquiry चलीची, जो पर्यंत proof हैनी, right. If जदि employee से feel कला कि no, the organization is doing some kind of injustice, no, to me, so here the employee can go for the court of law. कोठी की जीवो ना, Industrial Dispute Act 1947 रो labor court अछि. As per the Industrial Dispute Act 1947, the labor court is there where the employee can go to the labor court and can take action against the organization and the employers. So this is what the related to employee suspension. Students ध्यान रे मन रखिबो. Then असला retrenchment. Time हे गलग रे. Then asla retrenchment. Now retrenchment kono? So retrenchment means it is the again permanent termination of the employee towards the organization. Permanent termination of employee service towards the organization. हमें permanent terminate कर दबा employee को, retrenchment or termination. कहा को करिबा employee को permanent termination. आउ आस परिबो ना, आउ totally मुह देखेबो न मते, get lost. हैला काहे के get lost हाउ काहे के मुह देखेबोनी. See basically हम एटी कहबा variety reason अछि again termination. Termination केतेबेले employee को organization करिवो, see organization want to basically what, organization wanted to close down their business को पूरा close कर देबा को चाहछि, employee को terminate करिवो ही करिबा कोन, employee को रखी पैसा देबो, organization बंद कर देबो ना कोन, ना possible नो. So सेठी हमर close down कला हम business को. Second कोन हैला ना, हम second कोन करिबा ना, surplus of the staff ले, no, surplus हमें एइना देखिथिले हमर कहारो विप्रो moonlighting by the employees, से कोन कला ना लोकों को टर्मिनेट कर देला हैला, ड्यू टू द मून लाइटिंग सो विप्रो टर्मिनेट प्लेंटी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जोटा कि सेटा गुटा हमर हैला टर्मिनेशन प्रोसीजर रे गला.
हैला सेटा गोटे प्रोसीजर होई परिबो सरप्लस ऑफ एम्प्लॉय मेंचे लोक अछंती दरकार नै एते लोकन को बाहर कर दियो क्लोज डाउन द बिजनेस बाहर कर दियो हैला सो वेराइटी टाइप ऑफ थिंग्स इकोनॉमिक स्लो डाउन organization productivity is not there surplus of employees moonlighting by employees किए को रीजन रे से माने टर्मिनेट करि परिबे राइट एई जो टर्मिनेट आसिला ए जो टर्मिनेशन क्षेत्र रे नो वेदर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन कोन राति रे ऑर्गेनाइजेशन स्वप्न देखिला मु एई लोकन को टर्मिनेट कर देबी सकाळ आसला फायर कर देला देन तमे कोन करियो आ माने कोन करियो वी कैन गो फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ and we can take the action against the employer सेटा तो करि परिबोनी सो कोन करिवो ना as per the industrial dispute act 1947 कहूची कोन ना if in a organization more than 100 employees are working 100 रु अधिक लोक काम करूचंती then the organization have to serve 3 months notice to the employee केते मास नोटिस सर्व करिवो 3 मास नोटिस सर्व करिवो एम्प्लॉय को and it is compulsory right अच्छा जदि 100 जन रु अधिक अछंती 3 मास सर्व नोटिस करिवो तब 100 जन रु कम अछंती त माने लोकन को नोटिस होनी रात रात बाहर कर देबो नो if less than 100 workers are working in an organization then we can serve at least 1 month of notice so minimum 1 month maximum 3 months as per the less than 100 workmen more than 100 workmen basing on this we have to serve the notice to the employees right जोटा कि हमर एठी के कहला ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेति की खाली करबा नो आउरी बहु जिंस अछि कोन करबा ना एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय जते हम एम्प्लॉय को टर्मिनेट करबा द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे द कंपनसेशन केते कंपनसेशन दबो ना इक्वल टू 15 डेज ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ता माने एम्प्लॉयर कोन करबो ना इक्वल टू 15 डेज ऑफ वेजेस ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस फॉर एग्जांपल धर मु हेले गोटे एम्प्लॉय मते 3 मास नोटिस देला ता छडा मते कोन दबो कंपनसेशन दबो कारण मोर किछि फॉल्ट नै ऑर्गेनाइजेशन रो फॉल्ट पय मते टर्मिनेट करूछि हैला सेठी कोन करिवो ना मु कोन कहली ना एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जोटा कि हमें कोन कहले 15 डेज ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ता माने हैला मु 5 वर्ष ला काम करथिले ता माने प्रति वर्ष को 15 दिन हिसाब रे दबो ता माने कोन हैला 5 वर्ष रे मोर केते दिन हैला धर 15:5 हमें कले हमर 75 हैला हैला तो 75 डेज रो मते से कोन करिवो वेजेस प्रोवाइड करिवो ता छडा मते नोटिस देबो बेसिंग ऑन दिस आई कैन सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन राइट सो जदी सब किछि न कला देन आई विल गो फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ दीपक सर आसले कहइबो जे नेक्स्ट आसीबो कहइबो हैला अच्छा तापरे चलो ले पिला माने म आज के पढाई दोची कारण डिस्कशन कलालो हमर टाइम मिलुनी मते नेक्स्ट आसले कहइबो मु सेतेले ये करदे मु पढाई दोची आगे सुनी दियन जा डाउट अछि मते पचारिबे परे हैला तापरे कोन आसिला ले ऑफ आसिला ले ऑफ कोन से ले ऑफ गोटे जोटा कि हमर कहबा गोटे नोन वर्ड आफ्टर कोविड हम आगुरु ले ऑफ जानिथिले न जानिथिले दैट इज सेपरेट इशू बट एटा पूरा नोन वर्ड हे गला आफ्टर कोविड कोविड रे जो ले ऑफ अगेन चारियाडे खाली ले ऑफ चलिला राइट ले ऑफ कोन ना ले ऑफ जो चलिला व्हाट डू यू मीन बाय ले ऑफ मैम सी ले ऑफ मींस व्हाट it is the temporary separation of the employee not permanent settlement not permanent detachment it is a temporary separation temporary कौन separation होबो भाई देखे मोर एना दरकार नै ऑर्गेनाइजेशन रे तू हैला तो सेति पई तू कोन करे तू एना मो एना तते एफर्ट करि परिबिनी सो तू एना जाइता जतले मोर दरकार होबो मु तते डाकी हैला सेटा हला केतले चलतिला हमर कोविड रे सब लोगों को बाहर कर देतिला सब लोगों को कारण ऑर्गेनाइजेशन पूरा इंडिया बंद हे गला सेटा लोगों को रखी ऑर्गेनाइजेशन कोन करिवो बाहर कर देला जतले कोविड प्रॉब्लम सॉल्व हो गला तो ऑर्गेनाइजेशन कोन कला अगेन लोक मान को वापस बोलेला ना आसो भाई तुम माने मोर ऑर्गेनाइजेशन रे काम करिवो हैला सो ए जो सिचुएशन एटा को हमें कोन कहिले दैट इज अ टेम्पररी सेपरेशन टेम्पररी डिटैचमेंट ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन काहे कि एम्प्लॉय खाली कोन कोविड आसिला कोविड पूर्व अच्छा एना सिना मैम कोविड आसिला लोक माने को डाकिला पठेला जहा कला किंतु आगु तो कोविड नतिला सेतेले केमते ले ऑफ हैला ऑर्गेनाइजेशन केमते टेम्पररी क्लोज डाउन कला यस द एम्प्लॉयर कैन डिनाई टू द एम्प्लॉई to give employment temporary why because again the various reason was there reason is there reason was there covid khali gote not the covid is not a one reason kon sedi kon reason asi paribo na due to the it may be break down the machinery due to the insufficient raw material due to the
the basically we can say it is the insufficient power, right? जोटा कि power माने कौन electrical energy, government supply करनी electrical energy, power दौनी सेति पई company बंद हेके पड़िची. It may be due to the गोटे machinery भांगी जायछि तार parts आसीबो foreign रो सेति पई time लागो म कोन बसे के employee को पैसा देबे कि no. Then कौन हबो due to the basically what it may be breakdown machinery, it may be the insufficient power, insufficient raw material, and it may be the due to the natural disaster calamities also. Flood हे गला organization बंद कला से टाइम रे मु ले ऑफ डिक्लेयर करि परिबी, right? And all those things no एमती नै कि राता राती तुम ले ऑफ डिक्लेयर कर दबो. So for these the India as per the Industrial Dispute Act 1947 many rules, regulation, term conditions are there and you have to follow it. Rules, regulation, term condition पूरा vast अछि सब that we will हम त सेटा परे डिस्कशन करिबा. But हम एठी खाली गोटे जिंस जानिबा दरकार in the layoff जेतरे हमें ले ऑफ करूचे ना ऑर्गेनाइजेशन को. So at that moment जेमते हमें कहले सस्पेंशन रे से पैसा पाइबो ना नै, डिमोशन रे पैसा पाइबो ना नै, ले ऑफ रे से गोटे एम्प्लॉय पैसा पाइबो ना नै, पाइबो सबते पे पैसा पाइबे हैला. ले ऑफ जेतले कंपनी डिक्लेयर कर देबो सेते बेले कोन आसीबो द एम्प्लॉय विल गेट द वेजेस एंड सैलरी केते पाइबो ना. as per the Industrial Dispute Act 1947 the employee will get 50% of wage and salary हैला. 50% wages and salary पाइबे कहारो 50% पाइबे ना 50% of wages and salary up to of your basic रो 50% पाइबे. नो डीए टीए कोनोसी जिंस आउट इंक्लूड हबनी. कंपनी तो सेमती बंद हेकी पड़छ आपन को डीए देबो टीए देबो एचआर देबो सब देबो ना कोन से किछि दबनी. कोन दबो ना ओनली द बेसिक रो 50% आपन को दबो. केते दिन दबो ना अप टू 45 डेज 45 दिन पर्यंत से देई परियो. नै कि आपन घरे बसचंती आपन को घरे नेकरी पैसाटा पूरा इन्वॉल्व पे पूरा पैकिंग करिक देकी आसबो ना 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 ना. फॉर दैट यू हैव टू प्रेजेंट आपन आ गुटे एडु ले ऑफ हे गले आ गुटे जाई ऑर्गेनाइजेशन आ गुटे को जाई चाकरी करछंती आपन स्टिल एडु पैसा पाइबे. नो 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 सेफ दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल. you have जेमिति आस्ले सेमति ऑर्गेनाइजेशन को डेली आसीबे सेमति डेली आसी के प्रेजेंट पकेबे से जहा जहा काम दबो ऑर्गेनाइजेशन आपण करिवे से जो काम दोछि दो हैला. सो जो काम कोन आपण को माटी खोलिया कहबो कि त नुह त आपण कोन कहबो रिलेवेंट वर्क कहबो आपण को रिलेटेड वर्क. सो से तापे रूल्स रेगुलेशन अछि. सो से अनुसार आपण सैलरी वेजेस पाई परिबे, राइट? जोथि के हम कहा को माने पाइबे ना समस्त पाइबे नी. the temporary employee they will not get the layoff amount. Who will get? Only the permanent employee. Who is the permanent employee? Those name the employee the name of the employee it reflect in the muster roll. Ja na muster roll reflect करथबो. Now what do you mean by muster roll? जोटा कि HR रे हमर जो अछि salary slip होतबो ये होतबो बो होतबो tax deposit होतबो जहार सही ठीक डिस्प्ले होतबो they will get the layoff amount, right? So this is what we can call as a layoff of the employee in the organization. मने रखिबा को हैला. अच्छा एडी म गोटे जिंस कहनी रिट्रेंचमेंट टर्मिनेशन टाइम रे. सो टर्मिनेशन रे गोटे वर्ड यूज होची दैट इज द लिफो हैला. लिफो वर्ड को मन रखिबे. लिफो माने कोन लास्ट इन फर्स्ट आउट. लिफो फार्मूला हम अडॉप्ट करबा टर्मिनेशन बेले. लास्ट इन फर्स्ट आउट माने कोन जे लास्ट आस्तिले से फर्स्ट आउट हबो हैला. बाकी जे फर्स्ट आस्तिला जे पुराना से लास्ट आउट हबो. सो लिफो फार्मूला वी कैन अडॉप्ट एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन गला. तापर चलंतु जिबा डिसमिस डिस्चार्ज हैला. आपनकर सब मन रखिथिबे जहा क्वेश्चन मते नेक्स्ट क्लास रे पचारिबे. बुझी गले मु आज खाली कंप्लीट कर दोची कारण आपनकर सिलेबस बहुत वास्ट अछि. डिसमिस डिस्चार्ज कोन करिबा से डिसमिस डिस्चार्ज the organization can dismiss the employee due to what na due to the corruption. Apan kichute corruption again I made in number you have did some kind of misconduct in the organization. Misconduct means what jota ki mo sabu combination of sabu jinsa कहली सब apan ko misconduct भितरे right where the employer can dismiss the employee due to the employee may did some kind of misconduct, violation of rules and regulation, whatever may be the things you will do in the organization, it organization apan ko dismiss kar dabo, right? And it is a drastic step taken by the organization, right? And it will affect definitely it drastic gote step hela apan ko dismiss karagala where it will affect the earning capacity of the employee also. jota ki apan ko kahi ki karagala
ना एठी आपण कहबे मैडम डिसमिस कला वालो आपण ऑर्गेनाइजेशन पैसा दबो सेठी पैसा दबोनी आपण हैला तापर आसला कोन आपण करो ना आमे जिबा रिटायरमेंट रिटायरमेंट कोन ना रिटायरमेंट आमे जानि छी रिटायरमेंट आमे एम्प्लॉय को कले काहे के रिटायरमेंट कले आमे एम्प्लॉय को ना रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय again we can say it is a final separation and retirement also we can basically what the retirement the employee can the organization can retire the employee at the time of superannuation na retirement also we can call as a superannuation right so retirement again kemiti retire hobo gote employee organization ro again through compulsory or again through voluntary ma'am voluntary puni retirement achi yes compulsory retirement hobo voluntary retirement hobo compulsory retirement after attending the age means the superannuation age that is the compulsory retirement superannuation is that fixed by the organization fixed by the government no government jota amar superannuation date fix करछि at the age of 60 at the age of 62 at the age of 65 at the age of 58 jaha amar superannuation date fix करिछि से date wise जदि हमें organization रे separate हबा that we can call as a compulsory retirement जदि हम एठी कहिबा no kon kahiba na voluntary retirement we can call as a VRS voluntary retirement scheme also we can call as a golden handshake and you can retire towards the organization before superannuation date superannuation date purbaru apan mane eti retire kari paribe and kon apan superannuation date rin मन इच्छा हला apan ये कर देले पळे आसले ना 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 सेमती परिबनी here the organization will give the option to the employee edi organization employee option daba ka ko employee ko the basing on this the employee can retire before the superannuation date right so here the basically we can say the voluntary retirement scheme jota ite ko ame gote लोको काहे की धरो गोटे लोको superannuation before superannuation date the employee have to retire towards the organization at the age of धरो लोको को 40 वर्ष होची मैम से त आउरी 20 वर्ष काम करतन 60 वर्ष पर्यंत से काहे रिटायरमेंट करबो सुपर माने before superannuation date no and why the voluntary retirement scheme is there काहे की मु voluntary retirement नेबी see in the voluntary retirement it is a golden handshake kind of thing so other name of the voluntary retirement we can call as a golden handshake and it is a win-win formula दुई जनकर प्रॉफिट रहबो कार एम्प्लॉयर एटा हला गुटे गोल्डन हैंडशेक काहे की ना बिफोर सुपरएनुएशन डेट if the employee will separate from the organization through voluntary no your organization will provide every facility and benefit right you will the organization will give the salary apart from the salary तमरो पूरा salary को सेटल करिवो तुमको बोनस दबो तुमको variety facility दबो and also you can after ए जो organization रो बाहरला परे then कोन करिवो तमे you can work in variety kind of organization will with full of proud जोटा कि हमें कहू छे कोडा देखो हमें कहू छे कि एक्स सर्विसमैन जोटा कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आछि एम्प्लॉयमेंट माने जते गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करछि देखिबो एक्स सर्विसमैन मानन को पई बोली कोटा थाउछि सेठी काहे कि से जो माने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम रे अछन से माने मध्ये एलिजिबल तांको पई सेठी गुटे स्पेशल कोटा अछि नो से माने से भियर सेठी तो पैसा पाइथिबे सब सेटलमेंट करथिबे स्टिल आसी से माने करि परिबे सेठी पई काहे कि ऑर्गेनाइजेशन ए सब कोला जेमति कि हमें कहिबा ऑर्गेनाइजेशन सपोज एटा अधिक करे जाउची आर्मी एयर फोर्स नेवी पुलिस लाइन रे अधिक परिमाण रे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम नै जानती वॉलंटरी रिटायरमेंट नै जानती कारण से दे अनेबल टू डू द वर्क नो अनेबल टू टेक दैट मच ऑफ प्रेशर राइट सेठी से माने वीआरएस नै कि पळे आसन जो थ्रे कि से मानको सब फैसिलिटी सहित दे कैन वर्क इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जोति पाई कि गवर्नमेंट स्पेशल से मानको प्रायोरिटी मध्ये देछि सो दिस इज व्हाट द वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड दिस इज व्हाट द कंपल्सरी रिटायरमेंट so this is all about your employee separation from the organization final detachment and end of the contract deepak कौन अछि दीपक अच्छा स्टूडेंट्स चलो थैंक यू सो मच हैला जहा जहा डाउट अछि काली की फर्स्ट आपनकर डाउट क्लियर करिबी टुमारो आई विल फर्स्ट नेक्स्ट क्लास फर्स्ट आई विल क्लियर योर डाउट राइट then we will go हां दीपक हां मैडम क्लास करथन तेबे एफएम क्लास हबो एफएम हे गेला स्टार्ट हे गेलानी नहीं नहीं हबो ओबी थिला तो ओबी मैडम मना कले एफएम हबो अच्छा अच्छा सर जॉइन करछन अपन कंटिन्यू करथन सर असले में कह देम अच्छा हेले 2 वे कर दियो ठीक अछि।
पिला माने कार किछि डाउट आई होप कि समस्त भलो से बुझी जाइछो मैडम ड्राई प्रमोशन गुड मॉर्निंग मैडम हां जाने 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 ड्राई मैडम प्रमोशन है ड्राई मैम इंटर ट्रांसफर जाने एग्जांपल जाने One by one. जाने one by one yes please. very good very good sir hela one by one first पचले ड्राई प्रमोशन रे हमर डेजिग्नेशन टा चेंज हबो धरंतु फॉर एग्जांपल मु थिली कोन ये मैनेजमेंट ट्रेनी हला मैनेजमेंट ट्रेनी रो मु पळेले असिस्टेंट मैनेजर को designation will change promotion means the change will it may be the dry promotion it may be the promotion with upgradation designation ता change हे जिवो where salary facility benefits status सब कोनोसी प्रकार जिंस चेंज हबो नाही जहा थिला से ही रही मैम एमती काहे ऑर्गेनाइजेशन कला काहे की कला अपन जो ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करथिले बारंबार सर मोर प्रमोशन कर दियंतु सेतमा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन कर देला बट फॉर द टाइमिंग यू विल नॉट गेट एवरी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फैसिलिटी एंड बेनिफिट बुझी गले यस ना चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हां नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रा ट्रांसफर हला डिपार्टमेंट रु गोटे डिपार्टमेंट रु बाहर डिपार्टमेंट इंट्रा हला धरंतु आपण काम करचंती एचआर डिपार्टमेंट हला एचआर डिपार्टमेंट हला गोटे मेजर डिपार्टमेंट जो थिरे जहार बहुत सारा 50 टा खंडे सब डिपार्टमेंट अछि जो थिरे की आपण एचआर डिपार्टमेंट रो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एरिया रे काम करथिले आपण को ट्रांसफर कर देला कोठी की ना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को धरंतु ट्रेनिंग रे काम करथिले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रे काम करथिले आपण को ग्रीवांस सेल को ट्रांसफर कर देला एई जो अछि विद इन द एचआर डिपार्टमेंट आपण जुआडे मूव करिवे ताको कहला इंट्रा डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इंटर डिपार्टमेंटल कोन ना आपण एचआर ट्रेनिंग रे काम करथिले आपण को फ्रंट ऑफिस को पठे देला सेल्स रे हैला सेटा हला इंटर डिपार्टमेंटल काहे की आपण को एचआर रो मार्केटिंग मूव करेला दैट इज द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्लियर यस मैम थैंक यू ओके आउ के हां हां कोन रिट्रेंचमेंट रे जो कहिले कि 15 डेज रो दबो माने जेते टेन्योर सैलरी हां बट सेटा तो हमर हला ग्रेजुइटी कैलकुलेशन जोडा आपण कहिले 15 डेज नहीं सेटा अलगा ग्रेजुइटी आपण भूली जा ग्रेजुइटी रे हम टोटली ग्रेजुइटी टर्म ही उठेनी ग्रेजुइटी एक्ट हम 1972 अनुसार ताको डिस्कशन करबा पर ताको नै एईटा मध्य आपण जते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को जिबे सेठी आपनकर गुटे जो अछि टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट अछि हैला सेठी आपनकर ए सब आगो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रे लिखा अछि हैला जोटा कि 100 लोक थिबो कोन हबो 100 लोक कम थिले कोन हबो केते दिन रे से सवेजेस पाइबो सब आगो सेठी आपनकर मेंशन हैछि हैला ग्रेजुइटी अलगा बेनिफिट आज्ञा मैम डेपुटेशन टा कोन डेप्यूटेशन कोन डेप्यूटेशन हैला कि हमर ट्रांसफर रो गोटे पार्ट हैला डेप्यूटेशन जो थिरे कि हमें कोन करबा कि धरंतु मु हेले गोटे एम्प्लॉय धर मु तम डीडीसी को एग्जांपल रे नै कि जेबी डीडीसी रो डायरेक्टर रो रिटायरमेंट हे गला हैला रिटायरमेंट हे गला अच्छा डीडीसी डायरेक्टर को रिटायरमेंट हे गला माने ता माने डीडीसी रे हमें कोन चलेबानी बंद कर देबा नहीं हम तो डीडीसी चलेबा सेटु कोन करबो हठात रूप रे आम पाखरे लोक नांती ताको डायरेक्ट करबा पई कोन करबा ना उत्कल यूनिवर्सिटी रो सेही लेवल रो सेही स्किल रो सेही कॉम्पिटेंसी रो गोटे लोक आसीबे कोठु उत्कल यूनिवर्सिटी रो कोठी की डीडीसी को आसी की से डायरेक्टर रो पोजीशन को संभालिबे राइट द पर्सन विल हैंडल द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर राइट जेते बेले आमे कोन करबा एडवर्टाइजमेंट कले करिके गोटे परमानेंट डायरेक्टर सिलेक्शन कर देला आसे गले डायरेक्टर से एई जो उत्कल यूनिवर्सिटी रो जे आस्तिले का को डीडीसी को से लोक बैक पळेबे का कोठी की तांको पोजीशन को तांकर पोस्ट को से बैक पळेबे एई जो प्रोसेस टा को कोन को हागला ना दे वी कैन कॉल एज ए डेप्यूटेशन हे गला बुझी गले मैम सैलरी बायबैक में सारा सिलेंडर आसी गले हो चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स we will discuss rest आपनकर डाउट कमिंग क्लास रे आपन पचेरि परिबे आई विल क्लैरिफाई योर डाउट एवरी डाउट नो जहा क्वेरी डाउट अछि क्लैरिफाई करिवे एंड वी विल डिस्कस द परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट क्लास Sure, ma'am. हैला Thank you. ओके थैंक यू मैम थैंक यू so much.